Good morning, my dear students. Today topic start now. Ferromagnetism. What is ferromagnetism? North Pole and South Pole are present is two magnets. This is magnetic substance. Magnetic substance. This is magnetic substance. The substance which are very strongly attached by the magnetic field. The substance which are very strongly attached magnetic substance which are very strongly attached by the magnetic field, then these are known as ferromagnetism. The magnetic substance which are very strongly attached by the magnetic field, then these are known as ferromagnetic substance. Next point is ferromagnetism is the extreme condition. Ferromagnetism is the extreme condition of paramagnetism. फेरोमैग्नेटिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में पैरामैग्नेटिज्म माना जाता है। मतलब यह जो आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म जो है ये पैरामैग्नेट ही होता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। फेरोमैग्नेटिज्म एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर पैरामैग्नेट होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर पैरामैग्नेटिज्म ही फेरोमैग्नेटिज्म होता है। सो फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. These substances show permanent magnet even in the absence of magnetic field. These substances show permanent magnetism even in the absence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंट में ये परमानेंट ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। Hence, ferromagnetism substance are used form magnet. Ferromagnetism substance are form of magnet, small magnet. Ferromagnetism substance are used to form magnet. It can considered high order paramagnetism. It can be considered as high order paramagnetism. It can be considered as high order paramagnetism. This property is found in alloys. Of iron, cobalt, nickel, Fe3O4 and manganese. This property is found in alloys. Iron, cobalt, nickel, Fe3O4 and manganese. This substance have small ionic magnet. This substance, ferromagnetic substance, this substance have small ionic magnet. This substance have small ionic magnet. In the presence of strong magnetic field. These ionic magnets are arranged. मैग्नेट ये जितने भी मैग्नेट हैं ये रैंडम फॉर्म के अंदर हैं। किस फॉर्म के अंदर हैं? रैंडम फॉर्म के अंदर हैं। जैसे आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो ये जितने भी मैग्नेट जो थे ये अपनी सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे, एक सेम डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। रैंडम
जितने भी मैग्नेट जो होंगे, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको ऑन अप्लाइन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये ऑल मैग्नेट्स जो रैंडम मैग्नेट्स थे वो सभी की सभी वन डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। In the presence of strong magnetic field, this ionic magnet are aligned in one direction such a way the magnetic effect increase. In the presence of strong magnetic field, these ionic magnets are aligned in one direction in such a way that magnetic effect increase. On removing the field also, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पर लगाया, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इनकी मैग्नेटिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही आप ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ऑन रिमूविंग द फील्ड ऑल्सो दे बिहेव एज ए परमानेंट मैग्नेट। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। इसकी तरह बिहेव करेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स की तरह। On the removing of magnetic fields, on removing the field also they behave as a permanent magnet. On increase or decrease the temperature or beating, टेम्परेचर या तो आप क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें। बीटिंग मारना, थोड़ा चोट देना, बीटिंग। The arrangement of ionic magnet are distributed, and as such result their magnetic property vanishes. इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। देखो बेटा इधर देखें, ये ये आपके पास रैंडम मैग्नेट है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही ये जितने भी रैंडम मैग्नेट जो वन डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे और रिमूव करने के जस्ट बाद में ये मैग्नेट किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, एज ए परमानेंट मैग्नेट की तरह। या फिर आप क्या करते हैं कि इस परमानेंट मैग्नेट के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें और इसको बीटिंग करते हैं, चोट मारते हैं, तो ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इस मैग्नेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस मैग्नेट का, आयनिक मैग्नेट का डिस्ट्रीब्यूट जो है वो क्या हो जाता है, विनाश हो जाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी विनाश हो जाएगी, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज हाई ऑर्डर पैरामैग्नेटिज्म। This property is found in alloys of iron, cobalt, nickel, Fe3O4 and manganese. This substance have a small ionic magnet. In the presence of strong magnetic field, these ionic magnets are aligned in one direction in such a way that magnetic effect increase. On removing the field also, they behave as a permanent magnet. On increasing or decreasing the temperature, or beating, etc. The arrangement of ionic magnet is distributed, and as a result, their magnet property vinash. Okay. Interstitial compound. Next point is interstitial compound. What is interstitial compounds? The size of transitional elements are quietly large. The size of transitional atoms quietly large. This structure is close packing structure. So the size of transitional elements are quietly large when they are arranged in lattice. Then large interstitial voids. This is interstitial voids. When they are arranged in lattice, then large interstitial voids. Interstitial voids.
TITAL, interstitial voids. Interstitial voids are formed in these voids small non-stoichiometric atoms. Interstitial voids are formed in these voids small and non-metallic atom. Non-metallic atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen, helium. Hydrogen, boron, carbon, nitrogen, helium are trapped. Hydrogen, boron, carbon, nitrogen, helium are trapped. The compounds formation: helium, boron, carbon, nitrogen, helium are trapped. The compound formed by the trapping of smaller atom, the interstitial voids. The compounds formed by the trapping of smaller atoms in the interstitial voids. Smaller atom, suppose that hydrogen, carbon, nitrogen, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, helium. So the compounds formed by the trapping of smaller atoms in the interstitial voids. Of these transition elements are known as interstitial compounds. या interstitial elements are known as interstitial compounds. Interstitial compounds. What is interstitial compounds? The size of transition elements are quite large. When they are arranged lattice the large interstitial voids. लार्ज इंटरस्टिशियल वर्ड्स का मतलब बहुत सारी ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. These voids small non-atoms like hydrogen. Interstitial voids are small and non-metallic atoms like hydrogen, boron, carbons and nitrogen are trapped. Hydrogen, boron, carbon, nitrogen, helium are trapped. The compounds formed by the trapping of smaller atom in interstitial voids of the transition elements are known as interstitial elements. These elements are known as interstitial compounds. The size of transition elements are quite large. When they are arranged in lattice, then large interstitial voids are formed. In these voids, small non-metallic atoms. Small non-metallic atoms like hydrogen, boron, carbon, helium are trapped. The compounds formed by trapping by small atoms, hydrogen, boron, carbon, nitrogen in the interstitial voids of these transition elements are known as interstitial elements. These elements are known as interstitial elements are known as interstitial compounds. Some of the important property of chemical and physical property of these interstitial compounds. Some physical and chemical and physical properties. Some important of chemical and physical properties are of interstitial compounds of these interstitial compounds. This is first physical properties. The melting point are these compounds generally high. Melting points of these compounds are generally high. Second point is they are very hard and rich. Third point is they retain metallic conductivity. And fourth, they are chemically inert. In interstitial compounds are mobility and ductility of the metals decrease, but tensile strength increase due to the presence of the atoms.
The main point is chemical and physical property. The melting points of these compounds are generally high. They are very hard and rich. They retain metallic conductivity. So, interstitial compounds. Despite close packing in transition elements, some small space in left is left, which is known as interstitial space. Despite close packing in transition elements, some small space in left which is known as interstitial space. In these voids or interstitial small atoms. Small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen, boron, etc. can fit into resulting in formation of interstitial compounds. They are good conductor of electricity, harder and high melting point and boiling point. They are good conductor of electricity, harder and high melting point and boiling point. Next point is alloy formation. What are alloy formation? What are alloy? What is alloys? Next point is alloys. An alloys is homogeneous mixture of two or more metal and non-metallic compounds. Of two or more metals and non-metals. An alloys is homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सेम साइज. आपने जितने भी ये एटम यूज में लेंगे, डी ब्लॉक मेटल्स जो यूज में लेंगे वो सेम साइज के होने चाहिए. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम साइज एटम से. तो एन एलॉयस इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल इज brass, copper plus zinc is equal to brass. Formation of brass, alloys formation of brass, copper plus zinc. Bronze, copper plus tin. देखो बेटा, कॉपर सेम, बट ब्रास एस, इसमें एस नहीं मतलब एस एन, इसमें जिंक नहीं मतलब जेड एन, उल्टा होता है. ब्रास कॉपर दोनों में सेम, ब्रास ब्रॉन्ज. एस मतलब जिसमें एस एन नहीं, मतलब इसमें एस एन नहीं आ रहा. ब्रॉन्ज जिसमें जिंक नहीं, इसमें जिंक नहीं आ रहा, मतलब जिसमें एस आ रहा है तो जिसमें एस एन इसमें आ रहा है, उल्टा हो रहा है. इसका एस तो इसमें आ रहा है एस एन, और इसका जेड इसमें आ रहा है जिंक. तो ब्रास प्लस ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन. गन मेटल, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक. जर्मन सिल्वर, निकिल, कॉपर एंड जिंक. Formation of German silver, formation of alloy German silver, nickel, copper and zinc. Soldier, lead plus tin. Nichrome, nickel, chromium plus iron. Nichrome, nickel, chromium और iron. Soldier, lead plus tin. इनवार, इनका उल्टा कर दो, Ni, इन्वर्ट ऑफ इन, Ni, निकिल प्लस आयरन. एलनिको, एल्युमिनियम प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट. एलॉय फॉर्मेशन ऑफ एनिको, एल्युमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट. इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर प्लस जिंक प्लस मैग्नीशियम मेटल्स. कॉपर प्लस जिंक प्लस मैग्नीशियम. आर्टिफिशियल गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल गोल्ड्स, कॉपर प्लस एल्युमिनियम. फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल गोल्ड, कॉपर प्लस एल्युमिनियम. बेल मेटल, कॉपर प्लस टिन. बेल मेटल्स, कॉपर प्लस टिन. आर्टिफिशियल गोल्ड, कॉपर प्लस एल्युमिनियम. इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक प्लस मैग्नीशियम. एल निको, एल्युमिनियम, निकिल एंड
कोबाल्ट। इनवार इनका उल्टा कर दो तो निकिल प्लस आयरन। नाइक्रोम निकिल Cr क्रोमियम और एंड आयरन। सोल्जर Pb प्लस लेड, Pb लेड प्लस टिन। जर्मन सिल्वर निकिल कॉपर एंड टिन, निकिल कॉपर एंड जिंक। गलमेटल कॉपर टिन एंड जिंक। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन। ब्रांज कॉपर प्लस Zn। Next topic is F block elements. F block elements. F block elements. 28 elements in periodic table. 28 elements in periodic table. 28 elements in periodic table. Atomic number 58 to 71. 58 to 71. 14 elements. And atomic number 19 to 103. 14 elements. Total number of elements 28 elements in F block elements. 51 to 71. 4F elements. And atomic number 90 to 103. 5F elements. The elements in which n minus 1 n minus 2f orbital. The elements in which last electron enter in n minus 2f orbital are called F block elements. Last electron enters in n minus 2f orbital are called F block elements. Last electron, the elements in which last electron enter in n minus 2f orbitals are called F block elements. F block elements. Next point is F block elements are known as rare earth metal. F block elements are known as rare earth metal. Rare earth metals या rare earth elements. Rare earth elements. What is the rare earth metal? Which of the rare earth metals? F block elements. F block elements are rare earth metals. F block elements are known as rare earth metal. F block elements are known as rare earth metal. Electronic configuration. Next point is electronic configuration of F block elements. General electronic configuration of F block elements. N minus 2 F 1 to 14 N minus 1 D 0 to 1 and NS2. Electronic configuration of F block elements. Electronic configuration of F block elements N minus 2 F 1 to 14 N minus 1 D 0 to 1 and NS2. Electronic configuration of F block elements, very important. Electronic configuration of F block elements N minus 2 F 1 to 14 N minus 1 D 0 to 1 and NS2. N minus 1 to N minus 2 F 1 to 14 N minus 1 D 0 to 1 and NS2. Rare earth metal. F block elements are known as rare earth metal. Electronic configuration of F block elements N minus 2 F 1 to 14 N minus 1 D 0 to 1 and NS2. Last electron n minus 2 enter. This is the called of F block elements. The elements in which last electron enter in n minus 2 F orbitals are called F block elements. These elements are known as inner transition elements. Transitional elements and inner transition elements. Transitional elements and inner transition elements. Transitional elements
and inner transitional elements. Inner transitional elements. Transition elements, D block elements is known as D block elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स को D block elements को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जबकि inner transition elements F block elements are called inner transition elements. F block elements are inner transitional elements. D block transition elements and F block elements inner transitional elements. Transition elements, D block elements, inner transition elements, F block elements. These elements are known as inner transition elements because some of following region. Inner transition elements, F block को inner transition elements क्यों बोलते हैं, उसके पीछे some because some regions, some following region, some following region. F block elements known as inner transition elements. F block elements, these elements are known as inner transition elements because some of following region. First region, is n-2f orbital is found